morning, children. Today we are starting with the second chapter of your English 1, and the name of the poem is Daffodils. This poem is written by William Wordsworth, and he was an English poet born in England. During his writings, he had written various topics, various poems, various writings on different theme and different topics, out of which today we are going to study one very wonderful and easy to comprehend poem, and the name of the poem is Daffodils. Let us start with the poem. I would read the poem at one go, and then we would take up stanza-wise explanation of the poem. Let us start. I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. Continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretched in never-ending line. Along the margin of a bay, 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not but be gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. For oft, when on my couch I lie, in vacant or in pensive mood, they flash upon the inward eye, which is the bliss of solitude. And then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. By William Wordsworth, from 1770 to 1850. He left the earth on 1850, born on 1770. He was an English poet and is in the memories of all the poetry lovers, and he was born in England. Now children, I hope you would have comprehended. Comprehended means samajhna. I hope that you all have understood something about the poem, कि poet क्या कहना चाह रहा है. Let us see now stanza wise. I, इसमें I कौन है? I इसमें poet है. Poet कौन है? विलियम वर्ड्सवर्थ. जब भी हम कोई पोएम हो, चैप्टर हो या कोई राइटिंग्स हो, whenever we are reading, हमें एक चीज़ हमेशा नोटिस रखना चाहिए, that who is the writer, who is the poet of the thing or the writing or the poetry that you are reading. I is the poet. Wandered means यहाँ वहाँ घूमना. Wandered lonely as a cloud. Poet कहता है मैं बादल के जैसे यहाँ वहाँ I was wandering, यहाँ वहाँ भटक रहा था, यहाँ वहाँ घूम रहा था. जब हम किसी पर्सन को किसी थिंग से कंपेयर करते हैं तो उस कंपैरिजन को हम पोइट्री में कहते हैं सिमिली. सिमिली क्या है? सिमिली इज़ अ पोएटिक डिवाइस. पोइट्री क्या होती है? पोइट्री हमेशा एक फीलिंग का एक्सप्रेशन है. पोइट्री इज़ अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस. पोएट जब भी कोई पोइट्री क्रिएट करते हैं, राइट करते हैं, ये उनकी अपनी एक इमोशंस का एक्सप्रेशन होता है. सो हियर द पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ सेज दैट आई wandered means I moved here and there, lonely as a cloud. बिल्कुल बादलों के जैसे मैं जब यहाँ वहाँ घूम रहा था. तो इसने अपने आप को, पोएट ने अपने आप को बादलों से कंपेयर किया है, और इसी कंपैरिजन को हम पोएटिक डिवाइस की लैंग्वेज में कहते हैं सिमिली.
जैसे हम हिंदी में अलंकार पढ़ते हैं, वैसे ही इंग्लिश में वी हैव लिटरेरी टर्म्स. I wandered lonely as a cloud that floats on high over. Now ये है over, OVER, जिसे इन्होंने कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखा है, यानी शॉर्ट फॉर्म में. That floats. I was wandering, मैं बादलों के जैसे यहाँ वहाँ घूम रहा था. That floats, floats means बहना. That floats on high over vales and hills. Vales क्या होते हैं? वैलीज. वैलीज को इन्होंने इस तरह से लिखा है, वेल्स एंड हिल्स. नाउ चिल्ड्रन, पोएट, यू विल ऑलवेज सी पोइट्री में कुछ एक वर्ड्स इस तरह से प्रेजेंट किए जाते हैं जो जब आप पहली बार रीड करते हैं तो इट बिकम्स अ बिट डिफिकल्ट फॉर यू टू ग्रैस्प द मीनिंग. ग्रैस्प मीन्स अंडरस्टैंड द मीनिंग. लेकिन when the poets create a poetry, they always take words for granted and they happen to create their own way of style of writing. That floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd. तभी जब मैं I was wandering here and there lonely as a cloud, बादलों के जैसे मैं घूम रहा था, I saw, when all at once I saw a crowd, तब मैंने अचानक से एक क्राउड देखा. क्राउड क्या होता है? भीड़, जो हम इंसानों के लिए यूज़ करते हैं. तो जब ह्यूमन बीइंग क्वालिटी किसी नॉन लिविंग थिंग को दी जाती है तो हम किसी थिंग्स को दी जाती है तो हम उसे कहते हैं पर्सोनिफिकेशन. A host of golden daffodils. So the daffodils, what are daffodils? Daffodil is a flower. If you can see the picture in your textbook, these are the daffodil flowers. So the poet says, तभी मैंने all at once means अचानक से, I saw a crowd, a host of golden daffodils. Host is a group of golden daffodils. कहाँ पे देखा? Beside the lake, beneath the trees. Beside means by the side of, lake के पास में, और beneath means under the trees. See the atmosphere here, beneath the trees, trees के नीचे, और by the side of the lake. Now daffodils क्या कर रहे थे जब उन्होंने, पोएट ने जब देखा daffodils को, तो what were the daffodils doing? They were fluttering and dancing in the breeze. वो क्या कर रहे थे? जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स डांस और फ्लटर करते हैं, दे वर ऑल्सो डांसिंग एंड फ्लटरिंग. सो फ्लटरिंग और डांसिंग किसकी क्वालिटी है? ह्यूमन बीइंग्स की. अब ये किसे दे दी है? दिस क्वालिटी इज गिवन टू द फ्लावर्स ऑल्सो. सो वी कॉल दिस एज पर्सोनिफिकेशन. सो टुडे वी हैव लर्नड इन द फर्स्ट स्टैंजा दो पोएटिक डिवाइसेस हमने देखा. विच आर द टू पोएटिक डिवाइसेस? वन इज simile and the other is personification. Personification क्या होता है? Personification means giving human quality. And what is simile? Simile means comparing, दो चीज़ों में comparison, using the words as like. यदि यहाँ पे I wandered lonely like a cloud होता तो भी ये simile होता. अब as यूज़ किया है, then also it is a simile. Now let us see what are the rhyming scheme of this poem. Now poem के जो एंड में, हर लाइन के एंड में जो ये वर्ड्स होते हैं, इनका साउंड किसी दूसरे लाइन एंडिंग के साथ मैच होता है. Let us see, क्लाउड किसके साथ मैच हो रहा है? क्लाउड साउंड सिमिलर टू क्राउड, सो हम इसे A नंबर देंगे. A. हिल्स किसके साथ मैच हो रहा है? डैफोडिल्स, सो दिस इज B. सो A B एंड लास्ट के जो दो लाइन्स हैं, दे आर कपलेट्स विच इज द पोएटिक साउंड. व्हाट साउंड डू दे क्रिएट? ट्रीज एंड ब्रीज. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टैंजा. पोएट्री में हमेशा स्टैंजा होते हैं और प्रोज में वी हैव पैराग्राफ्स. सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्टैंजा. Continuous as the stars that shine. Continuous means without any break. Continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way. कैसे है ये? What is Milky Way? Milky Way क्या होता है? आकाश गंगा जिसे हम कहते हैं, मिल्की वे. ओके,
कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन, ये बिल्कुल उसी तरह से, मतलब अभी डैफोडिल को किससे कंपेयर किया है, एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, एंड दे आर ट्विंकलिंग एज इफ द स्टार्स ट्विंकल ऑन द मिल्की वे। स्काई में जैसे स्टार्स ट्विंकल करते हैं वैसे ही डैफोडिल गार्डन में शाइन कर रहे थे, बिकॉज उन्हें गोल्डन डैफोडिल कहा गया है। दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, अब वो कैसे हैं, दे स्ट्रेच्ड मीन्स दे वर इनटू अ लॉन्ग लाइन, ये कोई दो चार डैफोडिल्स नहीं थे, बट दे वर इन अ नेवर एंडिंग लाइन, बहुत दूर दूर तक डैफोडिल फ्लावर्स वहाँ पे लगे हुए थे। along the margin of the bay, किसके किनारे, along the margin of the bay, खाड़ी के किनारे किनारे बहुत सारे डैफोडिल्स देखे, किसने, विलियम वर्ड्सवर्थ ने। and then 10,000 saw I at a glance, 10,000 डैफोडिल्स उन्होंने देखे। अब हम कई बार ऐसे होता है ना, बढ़ा चढ़ा के बातें बोलते हैं, सो उसके लिए भी पोएटिक डिवाइस में एक नाम है, एंड दैट इज कॉल्ड एज हाइपरबली। नाउ HYPERBOLE, नाउ हाइपरबली मीन्स 10, कोई भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के, जैसे मम्मी हमेशा कहती है ना, मैंने बच्चों को 1000 बार कह दिया कि ये काम कर लो, लेकिन ये तो सुनते ही नहीं है। सो उसी तरह से मम्मी एक दो बार कहती हैं, लेकिन वो एक डायलॉग होता है, इट इज़ अ वे ऑफ सेइंग, एंड सो विलियम वर्ड्सवर्थ इज ऑल्सो सेइंग दैट 10,000 सॉ आई एट अ ग्लैंस टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, और वो क्या कर रहे थे, वहाँ पे डांस कर रहे थे, देवर बिकॉज विंड वॉज ब्लोइंग, सो क्योंकि हवा तेज चल रही थी, तो वहाँ पे बिकॉज ऑफ द विंड ब्लोइंग व्हाट वर दे डूइंग, दे वर डांसिंग। Now let us again see the rhyming scheme. Shine, line, A, way, bay, BB. Then glance and dance. Last two lines.